सर ऑनलाइन क्लास फोन करता हूँ. हाँ ठीक है सर, ओके ओके. सर कैन वी स्टार्ट नाउ? हाँ बता दो ना, मैं रुको ना. हाँ ठीक है. चांगला तंदुरुस्त राहते. Yes, we can start. Vinod, we can start. ठीक है सर, ओके. Good afternoon to one and all present here. I, Dr. Vinod Shinde, welcome you all in the day of 7-day online work on soft skills. सर आवाज क्लियर नहीं है. Respected Principal of St. Kesrimal Porwal College, Kamti, Professor Dr. Vinay Chavan, sir. Director of Vasantrao Naik Government Institute and Social Sciences, Nagpur, Dr. Manohar Kumbhare, sir. The Chairman of Board of Studies and the Head of English Department of Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, and the convener of this event, Dr. Kapil Singhal, sir. Head of English Department, St. Kesrimal Porwal College, Kamti, and the convener of 7-day online workshop, Dr. Swapnil Dahas, sir. All the co-coordinators of this event and dear students. I welcome you all on this virtual platform of 7-day workshop on soft skills. Today we are privileged to have Dr. Vaishali Meshram, Assistant Professor of English, Dr. M.K. Umate College, Nagpur, as a resource person. She will be delivering her lecture on mastering effective communication skills, unlocking the art of connection. Before I invite Madam to deliver her lecture, I take this opportunity to introduce her in brief. Meshram is currently working as an Assistant Professor of English in Dr. M.K. Umate College, Nagpur. She has been in the field of teaching for more than 25 years. Madam rendered her services as an IQAC coordinator for 6 years. She is associated with several committees in her institution. She has kept her academic interest alive by publishing more than 30 papers in UGC care-listed journals, national and international peer-reviewed research journals of repute. She has published her papers as chapters in books published by national and international level publishers. She authored a book on the syllabus of BBA and BCCA prescribed by RTM Nagpur University.
co-editor of the textbook prepared for BA second year English Literature by RTMNU. She has edited 4 books so far. She has also been invited as a guest speaker in the various curricular and co-curricular activities organized by the reputed institutions of Nagpur. She has organized webinars for faculties and students as well. She was one of the coordinators of 1 week online faculty development program approved by Ministry of Education, Government of India on Beyond Language and Acquisition Teachers held from 10th March to 17th March 2022. Her area of interest is Indian writing in English, diasporic literature, and post-colonial literature. She has also contributed to the course content development of compulsory English and English literature of arts faculty. She has also delivered a talk in the UGC-sponsored refresher course in environmental science organized by HRDC Nagpur. She is a recipient of Shiksha Ratna National Zero Mile Great Award 2019, given by Zero Mile Foundation Nagpur and New Adarsh Shramajivi Patrakar Sangha. With this brief introduction, I invite you, madam, to deliver your speech on the topic Mastering Effective Communication Skills, Unlocking the Art of Connection. Over to you, madam. Am I audible, sir? Yes, madam. Thank you so much for the kind words, dear Dr. Shende, sir. And thank you so much for having me here today on this virtual platform. A very pleasant afternoon to one and all who have converged here on the 4th day of the 7-day online workshop on soft skills organized by Bhasha Abhyas Mandal and Department of English, St. Kesrimal Purwal College, Kamti, in association with Vasantrao Naik Government Institute for Arts and Social Sciences, Nagpur. At the very outset, I wish to congratulate Honorable Dr. Manohar Kumbhare, Director VNGIASS, Nagpur, and Honorable Dr. Vinay Chauhan, Principal SK Purwal College, Kamti, for selecting such a wonderful and crucial topic for the workshop. I'm confident that this workshop will be a valuable learning experience for all involved. I also wish to extend my sincere Vaishali, madam, please unmute yourself. Vaishali, madam, please unmute yourself. Yes, I unmuted. Yeah. Okay. So I also wish to extend my sincere and heartfelt thanks to the buoyant conveners of the workshop, Honorable Dr. Kapil Singh, Chairman, Board of Studies in English, RTMNU Nagpur, Honorable Dr. Dahat, coordinators, and the entire team for providing me such a wonderful opportunity to share my knowledge and insights with the galaxy of exuberant participants. I feel extremely happy to be a part of this great learning expedition. Thank you so much. So, dear all, are you ready for today's session? See, this is going to be an interactive session. So so if I ask you something, please answer me either in chat box or you can unmute yourself, but don't fail to mute yourself, okay, after you finish your talk, okay? So feel free, and if you fail to understand anything during the session, please feel free to ask me questions that you have or that pop up in your mind at the end of the session. So let's get started. Let me share my screen. Here I go. Yes, can you see my screen? Yes, madam. No, ma'am. Yes. Sir, is it moving? Yes, ma'am. It is Okay. moving. Yes, good, good. So, ladies and gentlemen, and the beautiful girls and boys, exuberant students, the topic of my today's presentation, as you can see on the screen, is Mastering Communication Skills, Unlocking the Art of Connection. Before I start, I request all the participants to mute yourself because it is causing trouble, inconvenience. I'm not able to speak, dears and darlings.
So it is request to all of you to mute yourselves. Suhani, please mute yourself. Thank you, darling. Okay. So the topic of my today's presentation is mastering effective communication skills, unlocking the art of connection. In today's fast-paced world, the ability to communicate effectively is more important than ever. Communication skills are essential in every aspect of life, from from personal relationships to professional success. Okay, whether you are walking an interview or in a business meeting or presenting to a group of peers, or you can say, or simply engaging in a conversation, mastering effective communication skills can make a world of difference. So, in today's session, we will explore the key elements of effective communication and provide practical, tips and strategies to help you improve your communication skills. My prime focus will be on non-verbal communication, which is helpful in building strong connections with others. So by the end of this presentation, you will have a better understanding of how to communicate more effectively, both in personal and professional life. So let's dive in and unlock the art of connection through mastering effective communication skills. So let's get started. Let us begin with the beautiful, quotation. Gerald R. Ford has aptly said that nothing in life is more important than the ability to communicate effectively. How true it is, So the ability, the way you communicate with others, okay, the way means how effectively you communicate with others, okay, it definitely shows your status or shows your abilities actually. Okay, so let us start with the first slide. Okay, communication skills, heart of soft skills. Okay, but prior to that, let me tell you one thing. Listen to me carefully, darlings and dears. Okay, the topic which I will be covering today, okay, is a vast topic. Okay, you know that it requires near about minimum two lectures of 2 hours each. Means we need 4 hours to complete to cover this particular topic. But as I have been given only 1 hour, so I will try to cover all the topics, okay, in our 1 hour only. Okay, so we will have to go a bit faster. So if you stuck somewhere, don't get stuck over there. After we finish our lecture, you can ask me the questions. Okay, so is it okay, darling? Are we on the same page? Yes. Okay. So, yeah, but mute yourself. So, honey, mute yourself. Okay. Chalo. So communication, is many people, okay, they considered it as a soft skill. Means communication skills are nothing but soft skills. Okay, but let me tell you that the communication skills are far beyond, than soft skills, you can say. These are the most important skills that one must equip with. Okay, so what are the soft skills and what are hard skills you learned on the very first day of your workshop. Okay, so I will not tell you that, but as you can see the screen here today, so the picture is there. Okay, a key is there, so that key is called communication, which can open the doors to the future prospects. If you are good with if you have effective communication skills, if you have good persuading skills, okay, you will be able to succeed in your life. Okay, and that success will be it will be retained. Okay, it will be there, it will long lasting actually. Okay, so here a study made by Stanford Research Institute and Carnegie Mellon Foundation among Fortune 500 CEOs. Okay, they found it when they made a survey. उन्होंने एक survey किया था. In that particular survey, they found that
Okay, 80% means the success, the job, okay, the long-term job success, or in the success, professional success, okay, depends on 80%. It depends on the soft skills. Means 80% of the success will depend on the soft skills, that the skills that they have, that they acquire during their lifetime. Okay, and 20% success only depends on technical skills that they have. So which is most important? Which skills are most important? The soft skills are most very important. They are utmost important, my dears. Okay, so let us move ahead. The word, as we are discussing the topic communication, so this particular word communication is derived from the Latin word communicare, which means to impart, participate, transmit, okay, to share. Okay, so this is the meaning of the word communication. So communication में ही उसका मीनिंग होता है कि इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना, शेयर करना. अब क्या क्या शेयर करना है ना? So let us see the definition of communication. There are so many definitions, but still the time constraints are there, or time constant is there. So I will take only one definition. Okay, so what is communication? Communication is a process in which two or more individuals, okay, so in communication we need at least two individuals. हमको दो individual चाहिए होते हैं. एक जो बात करेगा अपने से उसको soliloquy बोलते हैं, है ना? तो हम अपने आप से बात नहीं करेंगे अगर उसको communication नहीं बोलेंगे, isn't it? So if you want to communicate with others, we need at least two individuals or more than two individuals in order to share or exchange their views, ideas, suggestions, information, thoughts, and feelings. What do we exactly do in communication? We share our views, ideas, suggestions, informations. Okay, we train them, we share our feelings with them. Okay, so let's move ahead. Now the question arises, why do we communicate? We are in, Indians. So if there, we tend to learn those skills or learn that particular topic where, where we are, there are chances of getting benefited, right? So here, let us discuss why do we communicate? Communicate किस लिए करते हैं हम? So you can see here, there n number of reasons are there. We communicate to convey our thoughts, to express our feelings, to convey our ideas, to express our ideas, to exchange information with our peers, in the class, okay, to persuade, to convince somebody, to educate, to impart knowledge, okay, to train somebody. Now this is the workshop, right? So all the resource person, they are training you, okay, and they are guiding you how to master these skills, okay, and in order to be employable, है ना? So employability skills are of utmost importance, and a communication skill is one of them. Without communication skill, you will not be able to succeed in your life. Okay, so be attentive, and whatever strategies we will discuss today, you have to implement in your life. Okay, so why do we communicate? We in order to motivate. What did I do? I encouraged you, right? I motivated you, okay, and to integrate. Okay, chalo. Now here, in this particular screen, okay, on this screen, you can see the different elements of communication process. Okay, so since we are discussing communication, so it is of utmost importance. It becomes imperative for us to know the elements of communication, the communication process. The first one is sender. You can see the two girls over here. Okay, and one is sender and the another is receiver. Okay, so and the medium they are using is mobile. They have mobiles in their hands. Okay, now they have certain plans with them, है ना? They have they have planned to go to movie, for example. See, you can see the message over there, right? देख रहे हो आप लोग? तो वहाँ पे message है. तो ये the first girl, okay, she has an objective to send a message. So she is sending a message. Movie start at 9. Can you drive us? Can you pick us up? Pick her up? Pick us up? है ना? तो वो बोल रही कि 9 बजे start होती है, तो क्या आ सकती हो? Okay. Now she sends the message. Okay. The sender encodes the message and sends through the medium. अब medium कौन सा है बच्चों? Medium है mobile.
Okay. Now the receiver, the other girl, okay, now she is also, means she is also engrossed in that, engaged in that particular process of communication. So she received the message. After receiving the message, what did she do? She encode the message. Sorry, she decodes the message. The sender encodes the message, and the receiver who receives the information or receives the message decodes it and then gives the feedback. अब वो क्या बोल रही है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, या be there by 8:30. Okay, so the target is completed. The goal is, or the objective of that communication is completed. So, in this particular process, okay, who are involved? The sender is of utmost importance, and then the receiver as well. Okay, so both of them, right? And they are, the sender is, the first girl is sending a message through mobile, and another girl, she receives the message and send the feedback. So feedback भेज रही है वो. Okay, so in this way, this particular, and this process is that this cycle goes on actually till the objective is achieved, है ना? So इसीलिए उसको बोलते हैं this is two-way process, है ना? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. वो टू वे प्रोसेस से होता है, तो फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? जो रिप्लाई होता है उसको हम फीडबैक बोलते हैं. वी विल हैव टू गो बिट फास्टर. Okay, so why is effective communication crucial? Crucial, what does the word crucial mean? Important. Why is it important to master these, communication skills? Why it is important? Because, the means here when we communicate, we use words. And my dear students, words are powerful. They have power. With words, okay, with right words, you can make the other person, okay, smile. Okay, you make them happy. And by using the wrong words, you can hurt them. So while using words, okay, you have to be very, very careful, right? So words have power. They are very powerful, and they are gateway to success. Okay, if you when you walk in interview, you present yourself before the interviewer, okay, and he or she gets impressed, and then you this particular interview process is nothing but a gateway, है ना? गेटवे समझ में आ रहा है ना आपको कि इंटरव्यू में हम क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्या परफॉर्मेंस. आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, है ना? सो these words, so you must use the apt words because it is a gateway to success. Okay, now when you when if you have effective communication skills, okay, you feel confident, right? And you can build a relationship, you can you can build rapport with your team members, with your family members, right? So in order to be confident, or in order to be successful in your personal and professional life, this communication plays a vital role, a pivotal role, okay, in your life. Okay, now it is these professional sorry if communication skills, they are also important in your professional growth. After you are placed somewhere, if you after you join any firm or company, okay, so your advancement in career is also important. So if you have good communication skills, okay, if you have good presentation skills, you will be definitely able to success, and you succeed, or you will be able to successful, you will be able to advance in your career. तो आपको promotions भी मिल जाएंगे. ऐसा होता है कि नहीं होता है? Okay, so let's move ahead. Okay, before that, let me ask you one question. Are we on the same page, dears and darling? समझ में आ रहा है आपको मैं जो भी बता रही हूँ? थोड़ा सा अनम्यूट करके बोल दो और म्यूट कर देना. समझ में आ रहा है आपको? तो कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब आई विल टेक इट एज अ यस. हाँ, मतलब आपको समझ में आ रहा है. ओके ओके, थैंक यू डार्लिंग. नाउ what are the skills required for achieving your, you can say, getting mastery over effective communication skills? Okay, so if you want to master communication skills, you must have the thorough knowledge of the topic.
right? And you must have mastery over language. Okay, so if you are well versed with the language, you have good communication skills. Okay, then your communications will be effective, वो effective हो जाएगा, है ना? और अगर आप अच्छा बोलना चाहते हो, अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो यू विल हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। पहले आपको सुनना पड़ेगा मेरे बच्चों, उसके बाद आप बोलेंगे, है ना? जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना अच्छा आप बोल पाएंगे, राइट? So you must be a good listener if you want to be a good speaker. Mark my words. So, and one should be creative, है ना? That person must have the ability to arouse interest in others. दूसरों को उनमें इंटरेस्ट, उनको encourage करने की कला भी उनमें होनी चाहिए, है ना? And that person should encourage others, and he must sympathize with others. He must have he must be kind hearted person. He must have sympathy for others, है ना? With others, and he must always respect others thoughts. Okay, so when we communicate with others, okay, we should always give importance to the other person who is standing in front of you, right? So what will happen, that person will be feel that will feel that he is important, or he or she is important, right? And he will engage himself or herself in that particular process, that is communication. So you will have to always be with the audience. आप जिससे बात कर रहे हो ना, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा. Okay, and another thing is that forget and forgive. Life is too short, my dear friends. So whatever, sometimes we get hurt by the words of our friends, right? So in that case, what we have to do, the greatest mantra, if you want to be happy in your life, forget and forgive. Forget, भूल जाओ और लोगों को माफ करना सीखो. You will be happy. Okay, so these are the traits of good listener. मैंने बोला ना बच्चों कि अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको अच्छा वक्ता बनना है, तो आपको अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा, आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, लिसनर बनना पड़ेगा. तो लिसनर क्या 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 ट्रेट्स है? यू मस्ट बी यू मस्ट बी अटेंटिव, यू मस्ट बी गुड लिसनर, है ना? And after you learn, okay, what do? You analyze it, you interpret the message given by the that particular the one who delivers the speech. Okay, and then you ask questions. Okay, then you reflect, you think, you ponder over the the topic that he or she had covered, and then you disagree or agree, right? So these are the good traits of these are the traits of good listener. तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि अगर आपको अच्छा श्रोता ये बनना है, वक्ता बनना है, कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है? नहीं तो बोलना पड़ेगा क्या क्या, तो इट विल क्रिएट बैड इंप्रेशन, है ना? तो आपका इंप्रेशन, आपको पता है इट टेक्स ओनली 7 सेकंड्स, 7 सेकंड में आपका इंप्रेशन दूसरे पे क्रिएट होना शुरू हो जाता है. तो 7 सेकंड में आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर आपके बारे में उनकी राय गलत करने में आप सक्षम हो जाते हैं. समझ में आ रही बात? तो ये जो 7 सेकंड्स होते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, बी केयरफुल. ओके, नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, है ना? सो सी, वर्बल communication, written and visual. So verbal communication, that is oral communication. Okay, the words here we use the exact words. Then non-verbal communication, we will see the definitions later on. Written communication में letters वगैरह आते हैं, आपको तो पता है वो written होता है पूरा. And then visual, whatever you see. Okay, so today I will focus on non-verbal communication. हम पूरा जो focus देंगे वो non-verbal पे देंगे. वो क्यों देंगे? You will come to know during the lecture. Okay, so let us go ahead, move ahead. So moving on, see, this is the definition of verbal communication. What do we exactly do in verbal communication? When we say verbal का मतलब क्या होता है? बोलना, है ना? Speech. Okay, so verbal communication is nothing but here we use the spoken words. Okay, spoken words are used to exchange information, emotions, और emotion means feelings or thoughts. तो ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं? We use the exact words, right? So when the example you can say, for instance, when you meet somebody, okay, and you talk to them, है ना?
तो हाय हेलो बोलते हैं, जैसे ये लेक्चर शुरू हुआ था तो हमने सबको ग्रीट किया, करते हैं ना। whenever you go to college, whenever you see your friends or your teachers, okay, you greet them. आप उनको ग्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उसको ही क्या बोलते हैं? दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। और आपके टीचर्स भी आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, वो रिप्लाई देते हैं, राइट। रेडियो देखते हैं आप लोग, उसमें भी आपको एडवर्टीजमेंट, जो भी आप ड्रामा वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, यू रिलेट योर सेल्फ विद द मूवीज एंड देन यू क्राई, है ना। रोते हैं कि नहीं? मेरे जैसे होंगे तो रोते होंगे, सेंटिमेंटल लोग जो होते हैं वो रोते हैं फिल्म देख देख के, isn't it? So these are in verbal communication we use words, है ना, in order to exchange information, emotions and thoughts. Okay, इतना समझ में आया? आगे जाते हैं। Now, when I say that, when we communicate, we use words. But, then question arises, is it possible to communicate without words? अच्छा बच्चों, मुझे आप बताओ थोड़ा अनम्यूट करके कि क्या वर्ड्स ना यूज करते हुए हम क्या अपने आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कैन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट यूजिंग वर्ड्स? बोलो। नहीं। नहीं कर सकते? बोलो और कौन? अच्छा, आपकी वजह आपके हिसाब से नहीं कर सकते। बताओ बेटे, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, नहीं तो क्या मजा नहीं आएगा। इट विल बी वन वे एंड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे प्रोसेस, इजंट इट? सो प्लीज कम्युनिकेट, प्लीज रिप्लाई। तो आपके हिसाब से क्या है कि मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ वर्ड्स जरूरी होते हैं क्या? ओके, व्हेनेवर अभी सुनिए एक बात को, व्हेनेवर यू सी योर फ्रेंड्स यू से हाय, करते नहीं करते? सो विदाउट सेइंग वर्ड, अटरिंग वर्ड हाय, यू जस्ट वेव योर हैंड, करते नहीं करते हैं? when your friend speaks, okay, so you nod your head. समझ में आया नहीं समझ में आया, इन अफर्मेशन इन निगेशन, है ना, तो करते हैं कि नहीं कि समझ में आया हाँ ना, है ना। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो गोल गोल करते होंगे, है कि नहीं? तो समझ में जाते होंगे आपके टीचर्स कि आप कौन से स्टेट में हैं। ओके, सो अभी इस बात से आप मेरे को ये बताइए कि पॉसिबल है क्या कम्युनिकेट करना विदाउट वर्ड्स? If you say no, so please look at this picture. Okay, actions speak louder than words. Okay, this is the proverb, dears and darlings. Now here you can see, a mother and a girl, daughter, mother and daughter duo. Okay, the child. Okay, the girl is sitting on the lap of mother. Okay, and they are, their faces are closed. Okay, see their full-fledged smile on their lips. Okay, and they have they have formed that particular shape of heart with their fingers. Okay, and see, look at their faces. Can't you say that that they communicate so much without using words? How are they? आपको क्या समझ में आता है ये पिक्चर से कि वो सैड है, ये है, क्या है, मतलब क्या समझ में आता है आपको? हैप्पी है ना? बातें करो यार, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो। अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि आपने खुला छोड़ दिया है ना, आपने मतलब ऑन करके रखा है और आप अपने काम कर रहे हो। डोंट डू दैट, है ना। तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। तो इसलिए बोला जाता है मेरे बच्चों कि साइलेंस इज गोल्डन एंड स्पीच इज सिल्वर। तो जितना आप अच्छे शांत रहेंगे उतना ज्यादा आपका मतलब इम्पोर्टेंस रहता है, आपका इंप्रेशन पड़ता है। Now here, this is a beautiful line, a quotation made by Edgar Gerard. Okay, here he said, "You do not listen with your ears." है ना, आप अपने कान से नहीं सुनते सिर्फ। You listen with your eyes and with your sense of touch. You listen with your mind, your heart, your imagination. Isn't it? So how apt it is. Okay, we listen with everything. हम कानों से सुनते हैं, आंखों से सुनते हैं, हम टच, किसी को टच, जो हमको टच करता है उससे भी सुनते हैं, है ना। अब मेरे को बताओ कि फॉर एग्जांपल a boy is there who has lost his father, for example, or living and कोई family members. Okay, he is dejected, he is sad. Okay, he is mourning.
over the death of his near one. तो अगर आपका फ्रेंड दूसरा कोई आता है और उसके इस पे मतलब ऐसे पैट भी करता है, उसके कंधे पे हाथ भी रखता है, तो he will feel that support. He will feel that the person is sharing his particular grief. He is consoling him, right? तो ये सारी चीजें होती है, तो जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हम इन चीजों से मतलब विदाउट वर्ड्स भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे बच्चों, है ना? तो देखो, मैंने पहले की बोला था कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। हमने बोला था कि हम सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल initially we have seen the definition of verbal communication where we use the words only. Okay, now see, in this particular here we are going to study the non verbal communication, and our prime focus will be on this non verbal communication only. So what is the definition? What is non verbal communication? It is the transmission of message or sign through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gesture, posture, and the distance between two individuals. The distance between two individuals is also very important. आपने बहुत लोगों को देखा होगा एकदम से पास आ जाते हैं, है ना? दे इंटिमिडेट बोलते हैं ना हम, मतलब वो अपने पर्सनल स्पेस में आ जाते हैं, एंड वी फील वी गेट अनकंफर्टेबल, है ना? वी बिकम अनकंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्ट हो जाते हैं हम. सो देयर शुड बी अ डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, है ना? ऐसे बोला जाता है कि 1.4 इंचेस से लेके 6 इंच तक उनका जो ये होता है, तो वो उतना डिस्टेंस होना जरूरी होता है. तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल है मतलब we don't use words. Okay, so is the transmission of message or sign through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, पूरे फेस पे जो expressions होते हैं, gestures means हम जो हाथ के जो movements करते हैं, we talk with our hands as well, है ना? So gestures, posture, the way we sit, है ना? ऐसे बैठेंगे, कैसे मतलब कैसे बैठना है, right? तो the way we sit, my dear friends, it sends a message, it gives a message to the person who is sitting in front of you, and the distance between two individuals. समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे facial expression है, eye contact है, touch है, then body movements and posture है, and then gesture है. Okay, we will see one by one. So these are the components of verbal, non-verbal education. Sorry, communication. ये सिर्फ non-verbal communication के क्या है पूरे? ये components है. In silence, through silence you can say you can say a lot, है ना? अगर आप चुप रहेंगे, उसमें डिसअप्रूवल, आपको कोई आपको बात कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, आप शांति रखेंगे तो क्या होगा? अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट है तो यू विल बी सेफ ओवर देयर, है ना? तो आप भी अगर वो बात करने रहे तो वो ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. तो साइलेंस कन्वेज अ लॉट. आई एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर बात करना रहा तो मॉड्यूलेशन जो करते हैं ना वॉइस के, and if it is supported with the eye expressions, what happens? It becomes more effective. अगर मैं ऐसे बैठी रहती थी, ऐसे बोलती थी एक मोनोटोनस वॉइस में, है ना, ऐसा है वैसा है, तो what would have happened, my dear? आपको अच्छा लगता था, वो आपको नींद आती थी, है ना? तो हम जब बात करते हैं तो हम मोनोटोनस वे में नहीं करते हैं. वी यूज और बॉडी लैंग्वेज, वी यूज ऑल द कंपोनेंट्स अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली. हम जानबूझ के नहीं ऐसे बोलते वक्त मैं ऐसे करूंगी, ऐसे हाथ करूंगी, ऐसे नहीं होता है. वी डू इट अनइंटेंशनली. ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशंस, दे से अ लॉट. योर फेस इज सो एक्सप्रेसिव, माय डियर्स एंड डार्लिंग्स. सो अगर आप बात नहीं किया फिर भी आपको समझ में आ जाता है सामने वाले को कि आप दुखी है, आप खुश है, आप सैड है, आप एंग्री है ना? आपको गुस्सा आया है ना? यू इफ यू डिसअप्रूव समथिंग, आप किसी से अग्री नहीं है ना? तो ये सब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पूरा पता चल जाता है. नाउ जेस्चर्स, द वे यू साइन, है ना? यू नॉड योर हेड इन अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, यू wave your hands and you shrug, है ना? So you shrug your body, right? I don't know, right? This is the shrug. These are all gestures. Okay, we will see later on. Then posture, the way you you stand, the way you walk, the from your peculiar gait, gait gait. Okay, people come to know about you.
forget about that, the way you park your vehicle. आप जैसे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं ना, the way you park your vehicle, आपकी जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, जो भी आप पार्क करते हैं, उससे भी आपका नेचर समझ में आता है। अगर आप अच्छे से सेल्फ डिसिप्लिन है, आपकी ऐसे रख दी आपने ऐसी आड़ी टेढ़ी, तो आप कैसे है? डिसऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल कुछ भी, मतलब ये है, आप एरोगेंट है ना? पोस्चर, ये पूरा सारी मॉड्यूलेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस आर इंपॉर्टेंट, देन टच, ओके, एंड अपीयरेंस, द वे यू कैरी योरसेल्फ, ओके, मेक्स द इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, ओके, whom you are टॉकिंग टू, है ना? तो ये बहुत मायने रखते हैं बेटे, ये सारी चीजों को लेके क्या बनता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनता है। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ही जो हमने अगर ऐसे किए गए, तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, जेस्चर्स है एंड पोस्चर है, ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? So in body language here, means what is body language actually? So non-verbal communication that involves body movement, है ना? हमारे हाथ के मूवमेंट, हमारे फेशियल मूवमेंट, है ना? तो ये सारे मिला के हमको पोस्चर वगैरह जो होता है, सब मिला के क्या होता है? बॉडी है। द यूज ऑफ फिजिकल बिहेवियर, एक्सप्रेशंस एंड द मैनरिज्म्स टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली। और ये हमेशा कैसे आता है? इन इंस्टिंक्टिवली आता है, नॉट डेलिबरेटली नहीं होता है, इंटेंशनली नहीं होता है, कॉन्शियसली नहीं होता है, इट इज अनकॉन्शियसली, है ना? इट इज ऑफन डन अनकॉन्शियसली रादर देन कॉन्शियसली, ओके? चलो, तो समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? थोड़ा सा हाँ ना बोल दो। हाँ मैम। हाँ, थैंक यू सो मच उज्ज्वला। चलो, सो हाउ डज बॉडी स्पीक? Like any spoken language, body language has words and sentences and punctuation. Instead of asking where are you going, है ना? अगर आप ऐसे भी करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि where are you going बोल रहे हैं, है ना? तो आंखों से भी वो पंचुएशन मार्क्स हो रहे थे, ब्यूटीफुल, है ना? तो ये क्या होता है कि हम वी कैन एक्सप्रेस, सो बॉडी लैंग्वेज, ईच बॉडी मूवमेंट हैज अ सेंटेंस और अ पंक्चुएशन, हैज वर्ड्स एक्चुअली। ईच जेस्चर इज लाइक अ सिंगल वर्ड एंड वन वर्ड में हैव सेवरल मीनिंग्स। तो इसीलिए हमको जो ये होता है बॉडी लैंग्वेज, जो वो बहुत केयरफुली, व्हेन यू यूज बॉडी लैंग्वेज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स। अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे you met your friend, I know, after so long, है ना, after 2 or 3 years, okay? So आपका रिएक्शन कैसे होना चाहिए when he suddenly accidentally meets you? तो आपका आपका कैसे होना चाहिए? एकदम से, oh my god, how are you buddy, where were you, long time no see, है ना? And then you hug him, है ना? आपके चेहरे से वो बिल्कुल वो जो एंथुजियाज्म है वो एकदम से झलकना चाहिए। और आपने अगर बोला, इसका मतलब क्या हुआ? कि आई एम हैप्पी that I met him or her, right? और अगर मैं बोलती हूँ, अरे कैसे है, अच्छा है, ठीक है, कितने दिन हो गए, कहा था, है ना? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? अभी फॉर्मल हो रही हूँ, मेरे बातों से बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि मैं हैप्पी हूँ उससे मिलने के बाद। सो योर वर्ड्स शुड बी सपोर्टेड योर facial, your body language you can say, है ना? फेशियल इज योर टोन, वॉइस, है ना? मॉड्यूलेशन जो करते हैं, टोन ऑफ वॉइस जो ये होता है वो वॉइस होता है। एंड देन द एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, दे स्पीक अ लॉट, राइट? सो हियर वॉइस, समझ में आया ना आपको? तो मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दे गो हैंड इन हैंड माय डियर फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं तो उसको हमारे फेशियल जो है, तो उसको मतलब बॉडी लैंग्वेज से उसको सपोर्ट करते हैं, वी मेक इट इफेक्टिव, है ना? So why is body language important then? Okay, so whenever we communicate, okay, 93% of the impression, or you can say 90% of that particular impression depends on the non-verbal things or the body language, right? So the body movement 50 out of 93, है ना? एंड 7% जो होता है वो एक्चुअल वर्ड्स जो आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, वो सिर्फ 7% उसका इंप्रेशन होता है। बाकी 93% किसमें होता है? नॉन वर्बल पे, इट डिपेंड्स ऑन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, आउट ऑफ 93, 55% goes to body movement, the way you
moves your body, use your hands, use your facial expression, gestures, the way your stance, the way you stand, right? So it creates, and the rest of 38%, sorry, 38% goes to voice tone modulations. अगर आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, आप उसके साथ अपने बॉडी को, जैसे मतलब सॉरी, वॉइस को, टोन को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, है ना? तो देयर शुड बी, इट शुड नॉट बी इन मोनोटोनस वे, इट शुड बी, देयर शुड बी हाई एंड लो, है ना? हम कब को बढ़ाना है, कब कम करना है, ये हमको पता होना चाहिए, राइट? सो 93%, याद रखना मेरे बच्चों, 93% of the success, or the success of communication, when you communicate with others, the means the, what can I say, the efficacy, or the importance, or the, you can say, the impression that we create is, goes to is 93%, ये 93% है। और 55% उसमें से बॉडी मूवमेंट को जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, जेस्चर्स है, मतलब हैंड मूवमेंट्स वगैरह है, और 38% हमारा जाता है वॉइस को, टोन को, जो मॉड्यूलेशंस होता है। और मेरे बच्चों सिर्फ 7% जो वर्ड्स हम जो बोलते हैं ना, वो याद रहता है, बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। अगर मीटिंग अटेंड किया आपने, या फिर कुछ कहीं कहीं गए आपने, तो जो स्पीकर बोलता है, तो उसके उसके आपको फेशियल एक्सप्रेशंस याद रहते हैं, ना कि वो क्या बोला, है ना? सो ओनली 7% उसका है। तो आप समझ में आ गया आपको कि 93% जो ना, हाउ इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इज, it impacts the speaker or the listener so much, है ना? तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चों। So you have to be very very careful and you must master the body language, है ना? Now why is ये पूरा है ना, मैंने जैसे अभी डिस्कस किया है, ये यही है। तो हम सब भूल जाते हैं, 7% ही होता है याद रखते हैं, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। रहता है याद तो फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द हैंड मूवमेंट्स ही हैज मेड, है ना? नाउ लेट्स एग्जामिन हाउ बॉडी कम्युनिकेट्स फ्रॉम हेड टू टो। हम जो बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी पूरी कम्युनिकेट करती है ना? पूरे जो हमने बोलते हैं ना, जेस्चर, पोस्चर, है ना? तो ये सारी जो मतलब ये जो सारी चीजें होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी कम्युनिकेट्स फ्रॉम हेड टू टो, है ना? सर से लेके पैर तक हमारी बॉडी बात करती है। सो हियर टुडे आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। तो टाइप्स ऑफ, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैंने बोला कि आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, जेस्चर है, पोस्चर एंड स्टैंड, एंड देन स्पेस रिलेशनशिप। सो आई कांटेक्ट, है ना, एक एक करते हैं हम। द आईज आर विंडोज, ये है ना, इसमें एक मिनट, विंडोज एंड मिरर्स ऑफ द सोल बोलते हैं, है ना? तो आपका जो आईज होते हैं, दिस आईज आर विंडोज टू सोल, है ना? Whenever you talk to any person, you must maintain eye contact. Maintaining eye contact is mandatory if you want to make it effective. अगर आप आंखें इधर उधर कर रहे, नजरें चुरा रहे, इसका मतलब होता है कि you are hiding something or you are lying, है ना? तो आंखों से आपके दिल का राज पता चल जाता है कि आप अंदर से कैसे हैं, है ना? तो बच के रहना मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और आपकी आंखें सब कुछ बोल जाती है ना? So it is very, very, eye plays a vital role, pivotal role in the communication. They are mirror to soul. So, when you talk to somebody, when you indulge yourself, in communication, okay, when you are communicating with others, make good eye contact. बात करते वक्त आपको दूसरों के आंखों में देख के बात करनी है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी गेट अनकंफर्टेबल, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इन दैट केस यू मूव योर आईज फ्रॉम वन आई टू अदर आई। तो आप उनके आंखों में देख रहे हैं सामने वाले की, तो पहले एक आंख में देखिए, थोड़ा सा उसको दूसरे आंख में देखिए, लेकिन इट इज इम्परेटिव टू मेक आई कॉन्टैक्ट if you want to convince somebody, if you want to make this particular this communication effective, अगर आपको इफेक्टिव। अब मेरे को बताइए, अगर मैं आपके किस में आती थी, क्लासरूम में रहती थी, अगर मैं आपके साथ मतलब आपको देख के मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं वॉल्स को देख रही हूँ, मैं खिड़कियों को देख रही हूँ, वहां पे टंगे फोटोज को देख रही हूँ, तो क्या होगा मेरे बच्चों? आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कि एक तो पहला है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है
है ना, और मैं इधर उधर की बातें कर रही हूँ और जस्ट मेरे को मतलब मेरे को जस्ट टाइम पास करना है, मेरे को आई जस्ट हैव टू वांट टू किल टाइम, है ना। सो इट शोज योर कॉन्फिडेंस। अगर आप दूसरों के आंखों में आंखें डाल के जब देखते हैं तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट। इंटरव्यू में जाने के लिए भी आई कांटेक्ट आपको जरूरी होता है व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू क्वेश्चंस, राइट। सो एंड यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट व्हेन यू आर लिसनिंग, है ना। वी मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू द अदर पर्सन। वो बात कर रहा है और आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे है, मोबाइल लेकर रखा है। These are bad manners, my dear friends. If somebody is talking to you, you must be attentive and you must respond. You must look at him or her, right? तो इसकी वजह से मतलब ये सारी चीजें होती है, तो हमको आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। छोटे बच्चों को देखा होगा आप, जब छोटे बच्चों के हम आंखों में देखते हैं ना, तो उसको हमारी आंखों से क्या पता चल जाता है कि ये चिढ़ रहा है, खुश है, बातें कर रहा है, एंड देन दे रिस्पॉन्ड, है ना। छोटे बच्चे उनको समझता कुछ नहीं है बट स्टिल दे रिस्पॉन्ड, होता है कि नहीं। तो आई कांटेक्ट में व्हेन वी लुक इनटू द आईज ऑफ समबडी और द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील सिक्योर, है ना। समझ में आ जाता है, आपको कंफर्ट ये जोन में चल जाते हैं। देयर ओपिनियन थॉट्स आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू अस। हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो सामने वाला इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है, एंड दैट इस्टेब्लिशेस अ बॉन्ड बिटवीन टू पीपल, है ना। तो अगर हम कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं या फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होता है या फिर आप किसी से बात करते हैं, तो मोबाइल में ना देखते हुए आपको उनके साथ आंखों में आंखें करके बात करनी पड़ेगी। तब जाके आप में गुड रैपो तैयार होगा, क्रिएट होगा, और इसकी वजह से आप देखो बच्चा, देख रहे हैं आप बच्चा, तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है बिकॉज द फादर इज स्माइलिंग, है ना। स्माइल है उनके फेस पे, तो बच्चा समझ जाता है कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज that the father is making the kid at ease, उसको comfortable कर रहे हैं, तो बच्चा respond करता है, isn't it? So now you have to be careful, my dear friends, है ना। too much eye contact shows dominance, lack of respect। एक जैसे staring होता है ना, looking at somebody is good, but if you stare ना, staring समझ में आ जाता है, आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जब स्टेयर करते हैं ना, तो it shows it that the person is threatening you, है ना, wish to insult you, right? So too much contact is prohibited, ये आपको avoid करना है, you must avoid this। too little eye contact, अभी बहुत कम आई कांटेक्ट किया तो इसका मतलब है कि आप अटेंशन पे नहीं कर रहे भाई, आप ध्यान नहीं दे रहे, यू आर बीइंग इम्पोलाइट नाउ, है ना, एंड यू आर इनसिंसियर, मे बी शाय। So these are the way you respond to others, okay, they can deduct meaning from your behavior। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपका आई कांटेक्ट से वो समझ जाते हैं कि विड्रॉइंग ऑफ आईज मतलब इधर उधर देखते रहते हैं ना, इसका मतलब है कि आपको उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। सो कैन जो योर फेसेस है, एक मिनट, कैन फेस स्पीक, तो मैंने इसका आंसर तो हाई है, आपको पता है, इसके पहले भी हम बोल चुके हैं, बिकॉज द फेसेस हैज द immense faces are extremely expressive and they have the ability to express countless emotions or feelings, है ना। तो हमारे चेहरे पे बिना बात किए हमको समझ में पता चल जाता है कि वो हैप्पी है, सैड है, उसको डिस्प्लेजर है, मतलब ही इज नॉट हैप्पी विथ व्हाट यू आर सेइंग, एंग्री, है ना, फियर, ही इज फ्राइटेंड, और he is not interested, or whether he is interested or not, okay। So you can the faces speak a lot, they do lot of talking, my dear friends, so be careful। These are different facial expressions, we have just discussed it, okay। Now the most important thing that you must always bear on your persona is a smile। You don't cost anything, my dear, it doesn't cost anything to you, right? It is free। आपको क्या करना है, स्माइल, जेन्युइन स्माइल करना है, एंड आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं। व्हेन यू स्माइल इट पर्स योर फेस अप, आपको वो ब्यूटीफुल बना देता
है ना? तो आप जब मुस्कुराते हैं, हंसना इज डिफरेंट है, मुस्कुराना इज डिफरेंट। सो अगर आप हंसते हैं तो इट मीन्स दैट यू मस्ट सी डॉक्टर इमीडिएटली, है ना? तो बेवजह हंसना भी डेंजरस होता है, लेकिन स्माइल यू शुड ऑल। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को कि टमेटो लेते हैं, पोटैटो लेते हैं, बहुत सारी चीज वेजिटेबल्स लेते हैं, तब भी वो स्माइल करते रहते हैं, है ना? किसी को देख के भी स्माइल करते हैं। आपको पता है, it is said that Victor Borge, he has said that a smile is the shortest distance between two people. This is a shortest distance. मान लो अगर आप ना कभी वॉक पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन वॉक, है ना? अभी होता है ना, आप आजकल के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो आप जब वॉक पे जाते हैं, आप यू सी सो मेनी लॉट ऑफ पीपल, राइट? तो आप किसी जो रोज रोज जाते हैं ना, तो वो चेहरे फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी लोग रोज आते हैं। यू जस्ट लुक एट द पीपल एंड स्माइल, है ना? ऑन वेरी फर्स्ट डे दे विल गेट कंफ्यूज, दे विल बी कंफ्यूज, है ना, ये क्यों स्माइल कर रहा है मेरे को देख के, है ना? बट यू रिपीट द सेम थिंग नेक्स्ट डे, ओके, दे विल बी कंफर्टेबल। नहीं नहीं, ये अच्छा है, मतलब वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। तो वो थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाएगा। ऑन थर्ड डे द पर्सन यू व्हेन यू विल स्माइल, द पर्सन विल रेसिप्रोकेट, he will smile back, right? And the fourth day when you won't smile, that person will smile and greet to you, hi, है ना? ऐसे बोलेगा। and it happens my dear, this is proven, it is proven। आप जाके देखो, करके देखो, and it will be you will understand। So it is said that you must always wear smile on your persona, you look beautiful and handsome, okay, trust me। Now, a gentle word, a kind look, a good natured smile can work wonders and accomplish miracles, है ना? अगर आप आपके चेहरे पे वो पॉजिटिव वाइब्स है, आप अपने जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से उस सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल कर रहे हैं, यू आर सो एलिगेंट, यू आर लुकिंग ग्रेसफुल, आपका अपीयरेंस अच्छा है, सो इट can work, it brings it is miraculous actually, it brings wonders my dear friend। So just take a note of this sentence, है ना? ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। and when you feel positive, when you are happy, you will be successful, positivity leads to success my dear friends, है ना? तो स्माइल इंपॉर्टेंट है। ये देखो, स्माइल से क्या होता है कि सामने वाला भी, स्माइल इज ऑलवेज कॉन्टेजियस, ये कॉन्टेजियस होता है। आपने स्माइल किया तो सामने वाला भी स्माइल करता ही है। इट गिव्स गुड रैपो, आपके बारे में अच्छा कि आप अच्छे अंदर से अच्छे हैं, है ना? दिखावे की स्माइल, है ना? और ये जो अंदर वाली जो स्माइल आती है एकदम से, वो डिफरेंट होती है। तो सामने वाला समझ आ जाता है उसको कि ये प्रिटेंड कर रहा है कि ये सच में जेन्युइन स्माइल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट स्माइल। नाउ यू कैन सी हियर द फेस इज फ्राउनिंग, शोज एंगर, है ना? तो कितना गंदा लगता है, देखने में भी कितना गंदा लगता है। तो अपने भी चेहरे, आवर फेस स्टार्ट्स फ्राउनिंग, है ना? आपने देखा मेरे चेहरे पे एकदम से फ्राउन आ गया, है ना? तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अनप्लेजेंट है। स्नीयर्स, डिसलाइक, डिस्गस्ट, यू ऐसे करते हैं ना हम। So see, these are facial expressions. Okay, we will go a bit faster now क्योंकि बहुत ज्यादा है। ये जो sadness है, pouting lips है ना, ऐसे करते हैं रोने के लिए। These are gestures, different gestures you can see, है ना? उससे भी मीनिंग ये निकलता है कि ऑल द बेस्ट बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना? हैप्पी है ये बोलते हैं तो वी ब्लेम, वी क्रिटिसाइज अदर्स, है ना? वी ब्लेम अदर्स, राइट? सो ये सारी चीजें होती है। सो बीवेयर ऑफ योरसेल्फ, टेक नोट ऑफ इट डियर्स एंड डार्लिंग्स। पीपल नोटिस यू, द पीपल नोटिस यू, द वे यू सिट, the way you stand, the how you use your hands, means gestures, and ये पूरा जेस्चर जो करते हैं, हाथ के पैर के जो मूवमेंट्स होते हैं, व्हाट यू डू व्हाइल टॉकिंग टू समवन, ये पूरा लोग नोटिस करते हैं। इंक्लूड मूवमेंट ऑफ हैंड्स, फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल दीज इंडिकेट योर पर्सनालिटी, है ना? मैंने बोला है, तो इसीलिए नॉन वर्बल, मतलब 93% इंपॉर्टेंस किसको होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे होता है, बॉडी लैंग्वेज पे होता है, सॉफ्ट स्किल्स पे होता है मेरे बच्चों। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है इंटरव्यू में, अच्छे से ये क्लियर होना, क्लियर करना है, गेट थ्रू करना है, तो यू हैव टू टेक improve your, you will have to work on your personality, you will have to work on your body language। Now these are the different
hand movements. Okay, so the when it is extended towards others, है ना, it shows openness, है ना. हम जैसे अपने जो कॉलर से अनबटन करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा दूसरे मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड, वी लीन फॉरवर्ड, है ना, towards others, it shows that we are open, है ना. चलो, now here this is the stance. स्टांस का मतलब होता है द वे वी स्टैंड, और पोस्टर जो होता है. अब देखो ये जो है, like this, isn't it? Hasn't it? Now and the another here in this picture you can see that another person is he has opened his arms like this, है ना. It means that this stand is right, वहाँ पे ठीक किया है, क्रॉस किया है. तो जो फर्स्ट है वो it is unwelcome, it is not welcome. The second position is right, posture is right. You should always be open to criticism, to ideas, to the suggestions. Okay, so this is stance. Now here you can see the body, he has crossed his arms like this. इसका मतलब क्या होता है, डिफेंसिव है ना, रिजिड है बॉडी थोड़ा सा, एंड मिनिमल आई कांटेक्ट होता है. मींस दिस पीपल आर ट्राई टू दे डिफेंड देमसेल्व्स. ओके, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अदर्स. ओके, तो ये जो लोग होते हैं वो अपने आप में थोड़ा सा ये करने वाले, मतलब वो दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अदर्स. ओके, दे आर सो इंट्रोस्पेक्टिव. ओके, यहाँ पे देखो नर्वसनेस, हम नेल्स वी स्टार्ट बाइटिंग और नेल्स, ऐसे ऐसे ट्विचिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना. सो दीज आर द साइंस ऑफ नर्वसनेस. नाउ वी विल सी द हैंड जेस्चर्स. थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी मैं. सी व्हेन वी शो दिस साइन, इट मींस दैट ऑल करेक्ट, है ना, राइट, लुकिंग ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ओके, है ना, वंडरफुल व्हेन वी से, है ना. ओके, नाउ हियर व्हेन वी यूज दिस जेस्चर, इट मींस ऑल द बेस्ट, गुड, ऑल ओके, राइट. So you have done great job. Okay, and when you point it downwards, or jerk it downwards, what happens? You are insulting somebody or you are criticizing someone, isn't it? So these are the different. Now here the first position you see. Okay, he has just he has made the temple. He has just joined his fingers like this. If you want yourself to be heard by others, आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रूवल दे, तो ये जो है ये कॉमन और बहुत ही वेल नोन जो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हाथ का जेस्चर होता है. एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, ओके, और द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द पॉलिटिक्स, दे ऑलवेज कीप देयर हैंड्स लाइक दिस, है ना. So it shows positivity. It gives positive vibes to others. So whenever you say, ना ऐसे करके नहीं बैठना है आपको, या फिर ऐसे करके नहीं बैठना है, you will have to just keep your hands like this or like this, है ना. So it will give the positive vibe to the others. Okay, and आपका काम बन जाएगा, है ना. In second picture, what he has done, वो उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए, तो ये शोज अथॉरिटी, है ना. आपके टीचर जब क्लासरूम में जैसे इन्विजिलेशन वगैरह करते हैं, तो वो आप दोनों हाथ पीछे करके खड़े रहते हैं, है ना, और कभी कभी टेबल पे ऐसे खड़े रहते हैं, है ना. तो ये शोज अथॉरिटी, सुपीरियोरिटी. और ये जो देखा है आपने, उसने क्या किया है, एक हाथ ऐसे मुट्ठी बांधी हुई, दूसरा हाथ को ऐसे ये किया, जो ये होता है ये उसको ऐसे क्लच ये किया हुआ है ना. तो इसका मतलब होता है कि फ्रस्ट्रेशन है ना, इनसिक्योर फील कर रहा है वो आदमी. ये देखो यहाँ पे टीचर्स कैसे है बांधे हुए, है ना, पीछे. तो इसको हम बोलते हैं, ये जो जेस्चर होता है ये शोज सुपीरियोरिटी, ऑथोरिटी देता है. These are dirty hand gestures. You should avoid this, किसी को मारना विक्ट्री होता है, लेकिन फिर भी ये जो है किसी को पॉइंट करना, ब्लेम करना, हम जब झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं. बट वी फॉरगेट दैट द रिमेनिंग 3 फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, है ना. तो ये जो बाकी की 3 फिंगर्स वो हमारी तरफ होती है, लेकिन वी फॉरगेट दैट. ओके, सो दीज आर द dirty hand gestures. These should always be avoided, है ना, कभी यूज नहीं करो. ओके, हैंडशेक. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. आपको पता है ऐसे बोला जाता है, डू यू नो बिग बी, अमिताभ बच्चन, आप देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति.
तो उसमें जो अमिताभ साहब जो है ना, बच्चन साहब, जो जिस तरीके से वो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो चलती फिरती बॉडी लैंग्वेज की दुकान किताब है बोलते हैं। आपने अगर उनको केयरफुली नोटिस किया, जैसे वो है शाहरुख खान जी है, तो इन लोगों ने अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ये किया है, मतलब वर्क किया है। एंड व्हेन वी दे बिकम व्हेन वी ग्रो ओल्ड, वी बिकम मैच्योर, इट गेट्स वो जो उसमें मास्टरी आ जाती है ना, वो अपने आप आने लगता है। तो ये डिफरेंट हैंडशेक्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देखो ये कैसे पकड़ा हुआ है ना, इसमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा है। ये अच्छा है, मतलब ये जो फ्रेंड्स होते हैं, हम दूसरों को एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। तो ये जो है, ये तो ये देख रहे हैं आपको, जैसे नीचे के इसमें देखिए आप, सेकंड वाला जो है ना, ये तो टाइट बिल्कुल ब्रोन क्रशिंग है ना, मतलब सामने वाले को दिखाना है कि देखो मैं कितना पावरफुल है। एक मैं आपको बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली टू गर्ल्स, okay, whenever एक तो you feel hesitate to give your hands, or to shake others, है ना, you avoid hand shaking. But if you are giving your hand, okay, you extend your hand towards handshake, don't just give ऐसे ऐसे देते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे देते हैं, don't give that, है ना। it should be क्या बोलेंगे हम, जब इसमें जैसे एक बार मैंने ये बोला था, जैसे एक मिनट, हैंडशेक का जो होता है ना, so when we shake our hands, you should always take care the power or the pressure you are applying on the other's hand, है ना, and the angle at which you shake। जैसे आप अगर ऐसे ऐसे हाथ देते हैं तो इसका मतलब आप डोमिनेंट है। अमिताभ बच्चन जी हमेशा ऐसे हाथ देते हैं, है ना, वो इन ऑर्डर टू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल, है ना, हम उनको ये करते हैं, कभी कभी उस पे ऐसे हाथ रखते हैं, है ना, और इसका मतलब है कि वी सपोर्ट देम, उनके इस पे हाथ रहता है, उसके ऊपर हमारा हाथ होता है, इट मीन्स वी सपोर्ट देम। कभी कभी हम एक हाथ ऐसे हाथ करके हम क्या करते हैं, उनके शोल्डर को हाथ लगाते हैं, इट मीन्स दैट डोंट वरी, है ना, आई एम देयर विद यू, ऐसे इसका मतलब होता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, दिस आर डिफरेंट। ये जो है ना बीच वाला, ये दिस वन, तो ये जो होता है एक मिनट, हाँ, ओके, ये देखिए इसमें सी, कैन यू सी दिस फर्स्ट पिक्चर, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, कैसे पकड़ा है उन्होंने हाथ, उनका हाथ नीचे है, मैडम का हाथ ऊपर है, इसका मतलब ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू हर, ओके, एंड मेकिंग हर कंफर्टेबल, राइट। ये दूसरा देखिए, हाउ हैप्पी दे आर, उन्होंने कोई डील साइन की हुई है, एंड दे, और ये सबसे जो थर्ड वाला है ना बच्चों, वो हाथ में जो देख रहे हैं नाइफ आप, तो जो कोई पीछे जब जैसे हाथ रखता है हैंडशेक करते वक्त, they have bad intentions, evil intentions with them. So if somebody is doing that, don't indulge yourself in that with that particular person, or don't get connected to him or her, right। तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होना है, आपको इन लोगों से बच के रहना है। वो होते मुंह में राम बगल में सूरी, इज लाइक दैट, है ना, दे आर हिपोक्रेट पीपल। बराक ओबामा जी को देखिए कितना अच्छे से वो हाथ पकड़ा हुआ है, इट शोज, इसमें इट गिव्स पॉजिटिव वाइब्स, है ना। ये सब हाँ सामने देख के बताना होता है, ये आपको समझ में इतना नहीं आएगा। दिस इज शोल्डर श्रग, है ना, हम श्रग करते हैं, आई डोंट नो, है ना। when we rub your eyes, कोई बात कर रहा है आप और आंखों को ऐसे कर रहा है, इसमें यू आर अनसर्टन, यू आर डाउटिंग, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ओके। हियर when you open your arms, है ना, किसी को हेल्प करते हैं हम, हाथ ऐसे एक्सटेंड करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर ओपन, है ना, यू आर काइंड हार्टेड, यू इट इंडिकेट्स ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस, आप लोगों को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, है ना। सो लीनिंग बैक विद बोथ द हैंड्स, इसका मतलब है कि भाई साहब बहुत कॉन्फिडेंट है, ओके, एंड ही शोज सुपीरियोरिटी, है ना। समझ में तो आ रहा है, मुझे फास्ट जाना पड़ेगा, आई हैव टू कवर, बिकॉज आई हैव टू कवर, ओके। सी दिस, ये जो ये है ना बेटे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पोस्चर है, ये आपको बिल्कुल यू डोंट हैव टू क्रॉस योर आर्म्स व्हेन यू टॉक टू समबडी, ये क्लोजनेस दिखाता है, ये डिफेंसिव दिखाता है, दिस इज निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ये निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, तो आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं रखनी है, ये जो है ये अवॉइड करना है। स्पेशली टीनेजर्स जो होती है ना, छोटी लड़कियां जो होती है, वो ये प्रीफर करती है, बट आप बड़े होते जा रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल निगेटिव है, आपको ऐसा नहीं करना है। ये अगर जैसे आप बात करते हैं तो यू कीप योर हैंड्स इन द पॉकेट, है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप, you are powerless, you are weak, okay, you are trying to hide something, you are arrogant,
तो आप इट शोज एग्रेशन एज वेल। सो ये भी निगेटिव ये है। बहुत सारे बच्चे हमेशा पॉकेट में हाथ रख के खड़े हो जाते हैं जब कोई बड़ा बात करता है, तो ये दिस शुड बी अवॉइडेड माय डियर्स। बस मैं अभी कंक्लूड ही कर रही हूँ। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेस, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन? अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सी, लेट अस कंक्लूड विद दिस वर्ड्स। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये जो ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रास दिख रहा है, यहाँ पे स्किल लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वाटर कर रहा है, प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है ना? सो हियर बॉडी लैंग्वेज इज नथिंग बट द सेट ऑफ स्किल्स। ओके, जो ये पूरी मूवमेंट्स होती है, इस पे आपको वर्क करना होता है ना? सो इफ यू मास्टर दिस स्किल्स, दिस सेट ऑफ स्किल्स, यू हैव टू नर्चर देम, यू हैव टू वर्क ऑन इट, है ना? तो इसको, वो जो पौधे है उसको पानी देंगे, इसको कैसे नर्चर करेंगे स्किल्स को? यू विल हैव टू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, read a lot, study about it, because if you are able to master these skills, okay, nobody will stop you, you will become a successful person in your life. So let us conclude with these words. Thought is the bird, it is the bird. The idea comes in your mind, है ना? You thought about it, and then the language the blossom. Okay, now there is a thought in your mind, idea you have. Now how will you express it? By using language, है ना? It will blossom, you will express it, right? And then action, the fruit behind it, you will have to take action. What action? You will have to practice practice, है ना? Now mark my words, जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। तो आपको जो स्किल्स है वो डेवलप करने पड़ेंगे। I wish you all the very best, and thank you so much for the patient hearing. I thank all the organizers for giving me this wonderful opportunity to interact with the students. Thank you so much. Thank you, Hello, madam. sir. Madam. Thank you very much. Students, dear students, do you have any questions? Yeah, you can ask me. If you have any पूछो questions, बच्चों। you can unmute yourself and ask your questions. Yeah. और मैंने बोला था बेटे कि जो अच्छे लिसनर होते हैं, गुड लिसनर्स, दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। इसका मतलब ये था कि आप अटेंटिव थे, आपने सुना मुझे। बताइए। Also question in the chat box. हाँ, चैट बॉक्स ओपन करना पड़ेगा ना। लेट मी पुट स्पेस। यस, Yes. नो मैम बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने सब समझ में आ गया बच्चों, है ना? तो आप क्या करेंगे अभी? सर आपको सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो बच्चों जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, ये सब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट वर्क ऑन इट, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना? और जैसे आप इसमें मास्टर हो जाते हैं, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, नोबडी विल स्टॉप यू, है ना? स्काई इज द लिमिट फॉर यू देन। Okay, so I wish you all the very best. God bless you all. Thank you. Thank you so much. For delivering a wonderful lecture on topic mastering effective communication skills, unlocking the art of connection. Your lecture will definitely benefit the students to develop their communication skills, madam. Thank you so much. I also extend my heartfelt gratitude to the principal of St. Kesrimal Porwal College, Dr. Chavan sir, and director of Vasantrao Naik Government Institute of Social Sciences, Dr. Manohar Kumare sir, for their motivation to organize this event. I also express my thanks to both the conveners of this event, Dr. Kapil Singhal sir and Dr. Swapnil Dahas sir, for their untiring efforts to organize this event. Thanks are also due to all the coordinators and members of organizing committee for their help and support. Last but not the least, I express my thanks to all the students for their patient listening. Thank you so much. We will meet tomorrow at 12 noon, and we will be having Dr. Madhavi Muhuri as resource person for tomorrow's session, and she will be delivering lecture on Be Ambitious,